हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम द रेस्टोरेशन पोएट्री के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं द रेस्टोरेशन पोएट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रेस्टोरेशन पीरियड is from 1660 to 1700. The literature of the period is intellectual rather than imaginative or emotional. Means रेस्टोरेशन पीरियड में जो पोएट्री लिखी गई है वो इंटेलेक्चुअल है। ओके, so even of poetry which began prosaic was made to the work of prose and was largely judged by the standard of prose. So John Milton is a famous poet in restoration period. जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ओके, इनका एक वर्क है जॉन मिल्टन का विच पब्लिश्ड इन 1667 एंड आल्सो पैराडाइज रीगेन्ड वर पब्लिश्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, जॉन मिल्टन का वर्क है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये रेस्टोरेशन पीरियड में ही पब्लिश हुआ है। सो इन टोन, style and spirit they are the product of the Puritan age and Milton is the representative poet of the Puritan age. Okay, so now move towards features of restoration poetry. तो रेस्टोरेशन पोएट्री के फीचर्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट फीचर इज़ intellectual rather than imaginative or emotional and it has little imaginative power। मतलब रेस्टोरेशन पीरियड में जो पोएट्री लिखी गई है वो इंटेलेक्चुअल पर बेस है rather than imaginative and emotional। So second feature is it has little depth feeling and little spiritual glow and और वी मी से फेवर। ओके, मतलब रेस्टोरेशन पोएट्री में पोएट्री जो है उसमें लिटिल डेप्थ ऑफ फीलिंग है एंड इट हैज़ लिटिल स्पिरिचुअल ग्लो और फेवर। नाउ थर्ड फीचर इज़ आर्टिफिशियल डिपिक्ट्स। ओके, आर्टिफिशियल depicts the life of aristocracy rather than the common man। ओके, आर्टिफिशियल लाइफ जो it depicts the life of aristocracy rather than common man। Next feature is restoration poetry has or restoration poetry is critical and satirical in tone and points out social voices rather than individual verses। Restoration poetry points out social vices, okay, rather than individual virtues। social vices को point out करती है restoration poetry। Next feature is prosaic rather than lyrical and judged by the standard prose। prosaic rather than lyrical and judged by the standards of prose। Last feature is close attention is given to form, correctness, elegance and finish, or you must say polish। Okay, now we move towards the major poets in restoration period and what are the poetic forms। तो पोएटिक फॉर्म्स रेस्टोरेशन पीरियड में जो पोएटिक फॉर्म्स थे वो कौन से थे। सो पोएटिक फॉर्म्स आर the lyric, the ode, satire and the narrative poetry were the forms of verse practiced during the restoration period। Now we see John Dryden is a major writer in restoration period और उनका जॉन ड्राइडन का पीरियड है 1631 to 1700 and he has been called the greatest man of a little age।
जॉन ड्राइडन को द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ लिटिल एज कहते हैं। एंड इन 1670 ही हैज़ मेड पोएट लॉरेट। ओके, इन 1670 में उन्हें वो पोएट लॉरेट बने। And he reintroduced heroic couplet, that is lines of iambic pentameter, and उसकी rhyme है A A B B C C, okay, and so on. So जॉन ड्राइडन के जो मेजर वर्क्स है उसके बारे में जानते हैं। कौन से मेजर वर्क्स हैं जॉन ड्राइडन के? तो फर्स्ट इज हीरोइक स्टांजास ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, and it is in 1659. Second work is Absalom and Achitophel in 1681. Third is Annus Mirabilis in 1667. Next is The Hind and the Panther, 1687. Religio Laici in 1682. These are the some major work of John Dryden. And next writer is Samuel Butler. His period is 1612 to 1680, and he was born in Worcestershire. Okay, Hudibras 1663, Hudibras 1663 में पब्लिश हुए। इट इज़ अ नरेटिव satirical poem and was at once a success. Okay, two other poets of Hudibras followed in 1664 and 1678. Remember the years? Now Hudibras is a beating satire on the Puritans. In general, it is modeled upon the adventures of Don Quixote and Sancho Panza. Okay, now next poets are Earl of Dorset, Earl of Rochester, and Sir Charles Sidney. These three poets were fashionable men taking their poetry with fashionable irresponsibility, and their poems deals with the love theme in an artificial manner. Earl of Dorset, Earl of Rochester, and Sir Charles Sidney, इनकी जो poems है, it deals with love theme in an artificial manner. Andrew Marvell's also the major poet in this period, and his poems are satirical and vindictive, and it composed with deliberate clumsiness and obscurity. To His Coy Mistress is the best example of his work, To His Coy Mistress. Okay, there are some major writers of this period. Again, I tell you name of the major writers of Restoration period. First is John Dryden. His period is 1631 to 1700. Second we come say Samuel Butler 1612 to 1680. Andrew Marvell 1621 to 1678. John Oldham 1653 to 1683. Earl of Dorset 1688 to 1706. Earl of Rochester 1648 to 1680. Edmund Waller 1605 to 1687. Sir John Denham 1615 to 1669. And Sir Charles Sidney 1639 to 1701. These are the some major writers of Restoration period, and that's it. तो सेकेंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसमें मैंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में बताया है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और वे में से द रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में बताया है, और रेस्टोरेशन कॉमेडियंस राइटर्स कौन हैं। ओके,
इसके बारे में बताया है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसके बारे में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, एंड इफ़ यू लाइक इट so subscribe to my channel, press the bell icon button, and like, share and comment. Thank you.